टीचर्स, मैं हूँ आलमस जैकब। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मैं नहीं चाहता कि तुम अच्छे रहो। मैं अपनी वीडियो में देश हर तरक्की पसंद मुल्कों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहा था और मुझे पता था कि इस मुल्कों को मैं ही तबाह करूंगा। मैं चाहता था कि दुनिया के हर तरफ मुल्क तबाही के राह पे चले। लेकिन हमारी शैतानियत के सबसे बड़े दुश्मन माइकेला सीजारियो हम मेरे बीच में टांग अड़ाने की साजिश करनी है। अब अभी जो है माइकेला सीजारियो को कुछ इसके बारे में बात करने की इजाजत देता हूँ। तो सलाम बीबी, जैसे आलमस जैकब ने कहा है कि कुछ वाहियात सा बातें इन्होंने करके रखी है और किस तरह से वाहियात से बातें करके रखी है। मैं यहाँ जो है वीडियो के जो बीच असली पॉइंट है वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ नहीं दूंगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर चुकी हूँ। बस इंट्रो बस एडिट करने के लिए मैंने शूट किए हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, वेलकम 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 वॉचर्स आलमस जैकब, जो हमारी सोवेरियनिटी के खिलाफ काफी वाहियात के बातें करते रहते हैं, जो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा ये लोग पैदा करते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आलमस जैकब जैसे लोग जो है हमारी सोवेरियनिटी के खिलाफ और डेवलपमेंट के खिलाफ बातें करें। तो मैंने जो पहले पॉइंट में रखूंगी वो ज़्यादातर सोवेरियनिटी के खिलाफ जो वाहियात बातें हैं वो मैं पहले पॉइंट के में रखूंगी। क्योंकि देखो भैया, आज का ज़माना तो सीधे जंग या फिर न्यूक्लियर जंग का ज़माना तो है नहीं। आज का जंग है कोल्ड वॉर का ज़माना। तो कोल्ड वॉर में ज़्यादातर जो है, अगर असली जंग रियल वर्ल्ड शुरू भी हो जाए
तो भी जंग के मैदान में हमारे यहाँ जो पॉइंट्स है, क्या बताऊं मेरे यार, हाँ, बताने में दिक्कत होने लगी। फिर भी मैं बताऊंगी। और जो बातें बताने जा रही हूँ वो दरअसल ये है कि आल्मस जैकब, जो मेरे पहले पॉइंट पे, जो आल्मस जैकब जंग के जो मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है उसको लेकर एक वाहियात से बातें की है, जबकि मैंने यहाँ अपनी बेहतरीन पॉइंट मैंने रखी है और आगे भी रखूंगी अगर आल्मस जैकब फिर से दोबारा ऐसा हरकत करने की जरूरत की हो तो मुझे नहीं लगता कि इनको लेकर ये बकचोदी कहाँ तक रुक जाए। तो ये मैं नहीं जानती। ये पॉइंट नंबर 0। अब पॉइंट नंबर 1 पर है तरक्की को लेकर। आल्मस जैकब ने कहा कि जो मुल्क धर्म मजहब के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ कदम उठाते हैं वो मुल्कों के खिलाफ खुदा जंग करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के साइड पर जो बातें हैं, तो इजराइल के खिलाफ गंदी गंदी बातें करना शुरू की है। तो इसके काउंटर पॉइंट में मैंने रखी है कि डेवलपमेंट तो जरूरी है। अगर हमारे यहाँ पे रिलीजियस, कोई रिलीजियस कंट्री पे रिलीजियस स्पॉट अगर बॉयकॉट हो या फिर बंद हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तब होती है जब रिलीजियस पॉइंट कोई बंद ही ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कैसे बताऊं यार, ये मुझे नहीं पता है। पूरी वीडियो में मैं अपनी आवाज नहीं दूंगी, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आवाज में बात करूंगी और 2-4 सहेली मेरे साथ बात करेंगे, जबकि मैं टाइप करूंगी ही कुछ। खैर, अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ, बहुत बातें मैंने कर दी हैं। आप वीडियो शुरू की जाए। almas jacob देख रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका का ये जो कमांडर यहाँ पर खड़ा है, इसका जो यूनिफॉर्म है सेम टू सेम वैसा ही यूनिफॉर्म, सिर्फ यहाँ पर जो टेक्सचर बना हुआ है सिर्फ वो फर्क है, कलर्स फर्क है। बाकी आप देख सकते हैं कि सूट की बनावट जो है वो बिल्कुल सेम है। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ है और आप देख सकते हैं कि इनके ड्रेस में और अमेरिका की आर्मी के ड्रेस में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इन सब की बनावट सेम है। आप देख सकते हैं जिस तरह की शर्ट बनी हुई है, इनके कफ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी कॉलर देखें, सेम टू सेम कॉलर आपको नजर आ रही है। उसके अलावा बिल्कुल सेम शर्ट नजर आ रही है। इसी तरह से जहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से नाम लिखे हुए, और ये यूएस आर्मी के हैं, ये पाक आर्मी के हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम उसी तरह से सेम टू सेम ड्रेस
क्यों है। नीचे टी शर्ट देखे कैसे उन्होंने पहनी हुई है, ऐसा नहीं, उन्होंने पहले नीचे टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। और इसी तरह से उनके ट्राउजर्स की शेप भी बिल्कुल सेम होती है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका की आर्मी का ड्रेस एक जैसा है। फिर सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया की भी आप देख सकते हैं कि आर्मी का ड्रेस सेम टू सेम आपको नजर आएगा, बस सिर्फ कलर का फर्क है, टेक्सचर का फर्क है। बाकी शर्ट की शेप बिल्कुल वही है, कॉलर बिल्कुल वही है, नाम उसी तरह से लगा हुआ है और उसी तरह से इनके ट्राउजर्स हैं और बाकी जूते वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्यों है। अब ये बात सिर्फ मैंने नहीं नोटिस की है, आप देख सकते हैं कि रेडिट के ऊपर किसी ने सवाल किया, व्हाई सो मेनी नेशंस adopted वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स एंड ब्रास बैंड्स। अब इसी तरह से
रेडिट के ऊपर किसी ने सवाल किया, why so many nations adopted western style military uniforms and brass bands? और इसी तरह से कोरा के ऊपर किसी ने सवाल किया, why does army all around the globe has almost similar uniform? अब ये लोग जिन्होंने ये चीज नोटिस किया वो सवाल कर रहे हैं कि असल में ऐसा क्यों है। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है और उसकी रीजन ये है कि जब मुल्क फर्क है, आइडियोलॉजी फर्क है, कल्चर फर्क है, तो ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम क्यों है। उसकी एक रीजन ये है कि इस वक्त वन वर्ड कॉमन बनाने के लिए सबको, आर्मी को खास तौर से मैं आपको बता दूं, इनको एक किया जा रहा है ग्लोबली, एक ग्लोबल आर्मी बन रही है। और उसकी रीजन ये है कि अब आर्मी जो है वो आपस में फाइट नहीं करेगी, आर्मी ने आपस में जंगें नहीं करनी है। इनकी जंग किसके साथ होगी? सिविलियंस के साथ, खास तौर से उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ जिनको ये लोग दहशतगर्द का नाम देंगे। तो मैंने इनका जिक्र क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इसराइल के अंदर हो ये रहा है कि इसराइल जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सेस, यानी कि Certainly, my friend. Let's delve into the pros and cons of different military uniforms. While there are valid reasons for both uniformity and diversity, let's explore the potential drawbacks of distinct military attire. Unity and identity. Uniformity, pros wearing identical uniforms, fosters a sense of unity and camaraderie among troops. It reinforces the idea that soldiers belong to a cohesive team, regardless of their individual backgrounds. Diversity, cons different uniforms can lead to confusion on the battlefield. When soldiers from various units or countries operate together, distinct attire might hinder quick recognition and coordination. Operational efficiency. Uniformity, pros standardized uniforms simplify logistics, maintenance, and supply chains. It's easier to manage and distribute identical clothing and equipment. Diversity, cons managing multiple uniform types can be logistically challenging. Different sizes, materials, and designs require additional resources and planning. Cultural and national identity. Uniformity, pros a consistent appearance reinforces national pride and identity. It symbolizes a shared commitment to a common cause. Diversity, cons however, unique uniforms can also celebrate cultural heritage and diversity. Some argue that distinct attire reflects a nation's rich history and traditions. Psychological impact. Uniformity, pros identical uniforms promote discipline and a sense of duty. They minimize distractions and emphasize the seriousness of military service. Diversity, cons on the other hand, unique uniforms can boost morale and individuality. Soldiers may take pride in their distinctive regalia. Adaptability and camouflage. Uniformity, pros uniforms designed for specific environments, e.g., desert, jungle, or urban, enhance camouflage and protection. Standardized patterns ensure soldiers blend seamlessly into their surroundings. Diversity, cons different uniforms may not be optimized for all terrains. Soldiers might stand out or face discomfort if their attire doesn't match the operational context. Cost and resources. Uniformity, pros economically, mass-producing identical uniforms is cost-effective. Bulk orders reduce expenses. Diversity, cons customizing uniforms for each unit or country constrain budgets. Tailoring research and development add up. International cooperation. Uniformity, pros when multinational forces collaborate. Standardized uniforms facilitate cooperation and interoperability. Diversity, cons unique uniforms might unintentionally create divisions or reinforce nationalistic sentiments. In summary, while uniformity offers practical advantages, embracing diversity acknowledges cultural nuances and historical context.
The decision ultimately depends on a nation's priorities, military strategy, and values. The evolution of military uniforms, a comprehensive guide to the history and development of military attire. Read more. Military uniforms and the law of war. Read more. Military uniform Wikipedia. Read more. Military uniform basics for friends and family military one source. Read more. Guide to military uniforms military.com. Read more. निसंदेह मेरे मित्र, आइए विभिन्न सैन्य वर्दी के फायदे और नुकसान के बारे में जानें। हालांकि एकरूपता और विविधता दोनों के लिए वैध कारण है, आइए अलग अलग सैन्य पोशाक की संभावित कमियों का पता लगाएं। एकता और पहचान। एकरूपता। पेशेवर एक जैसी वर्दी पहनने से सैनिकों के बीच एकता और सौहार्द की भावना बढ़ती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि सैनिक एक एकजुट टीम के होते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि कुछ भी हो। विविधता। विपक्ष। अलग अलग वर्दी युद्ध के मैदान में भ्रम पैदा कर सकते हैं। जब विभिन्न इकाइयों या देशों के सैनिक एक साथ काम करते हैं, तो अलग अलग पोशाक त्वरित पहचान और समन्वय में बाधा बन सकते हैं। 2. परिचालन दक्षता। एकरूपता। पेशेवर मानकीकृत वर्दी रसद रखरखाव और आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाते हैं। एक जैसे कपड़ों और उपकरणों का प्रबंधन और वितरण करना आसान है। विविधता। विपक्ष कई समान प्रकारों का प्रबंधन करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विभिन्न आकारों, सामग्रियों और डिजाइनों के लिए अतिरिक्त संसाधनों और योजना की आवश्यकता होती है। 3. सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पहचान। एकरूपता। पेशेवर एक सुसंगत उपस्थिति राष्ट्रीय गौरव और पहचान को पुष्ट करती है। यह एक सामान्य उद्देश्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विविधता। विपक्ष हालांकि अद्वितीय वर्दी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी जश्न मना सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि विशिष्ट पोशाक किसी देश के समृद्ध इतिहास और परंपराओं को दर्शाते हैं। 4. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एकरूपता। पेशेवर समान वर्दी अनुशासन और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे विकर्षणों को कम करते हैं और सैन्य सेवा की गंभीरता पर जोर देते हैं। विविधता। विपक्ष दूसरी ओर अद्वितीय वर्दी मनोबल और व्यक्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं। सैनिक अपने विशिष्ट राज्य चिन्ह पर गर्व कर सकते हैं। 5. अनुकूलनशीलता और छलावरण। एकरूपता। पेशेवर विशिष्ट वातावरण, उदाहरण के लिए रेगिस्तान, जंगल या शहरी के लिए डिजाइन की गई वर्दी छलावरण और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। मानकीकृत पैटर्न ये सुनिश्चित करते हैं कि सैनिक अपने परिवेश में सहजता से घुल मिल जाएं। विविधता। विपक्ष सभी इलाकों के लिए अलग अलग वर्दी को अनुकूलित नहीं किया जा सकता है। यदि सैनिकों के पोशाक परिचालन संदर्भ से मेल नहीं खाते हैं, तो उन्हें अलग दिखना पड़ सकता है या असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। 6. लागत और संसाधन। एकरूपता। पेशेवर आर्थिक रूप से समान वर्दी का बड़े पैमाने पर उत्पादन लागत प्रभावी है। थोक वजह से खर्च कम हो जाता है।
विविधता व पक्ष। प्रत्येक इकाई या देश के लिए वार्ता को अनुकूलित करने से बजट पर दबाव पड़ सकता है। सिलाई अनुसंधान पर विकास जोड़ते हैं। 7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग एकरूपता पेशेवर जब बहुराष्ट्रीय ताकतें सहयोग करते हैं तो मानकीकृत वार्ता सहयोग और अंतर संचालनीयता को सुविधाजनक बनाते हैं। विविधता व पक्ष अनोखी वार्ता इंजानियों विभाजन पैदा कर सकते हैं या राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत कर सकते हैं। संक्षेप में जबकि एकरूपता व्यावहारिक लाभ प्रदान करते हैं, विविधता को अपनाने से सांस्कृतिक बारीकियों और ऐतिहासिक संबंध को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अंततः किसी देश की प्राथमिकताओं सैन्य रणनीति व नीतियों पर निर्भर करता है। रीजन लेटर I रीजन लेटर A रीजन लेटर B रीजन लेटर D सैन्य वार्ता का विकास। सैन्य पोशाक के इतिहास और विकास के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका। सैन्य वर्दी और युद्ध का कानून और पढ़ें https://www.crossdot/in/assets/file/assets/file/assets/file.pdf सैन्य वर्दी विकिपीडिया और पढ़ें https://n.wikipedia.org/wiki/military_uniform कोष्ठक। दोस्तों और परिवार के लिए सैन्य वार्ता की मूल बातें मिलिट्री रिसोर्स और पढ़ें https://www.militaryresource.com/relationships/support/military/uniform/कोष्ठक। सैन्य वार्ता के लिए गाइड military.com और पढ़ें https://www.military.com/join-insignia-guide.html कोष्ठक। My dear friend, your assumption is indeed thought-provoking. Let us explore the intricacies of this matter. Uniformity versus diversity in military attire, a strategic perspective. Advantages of similar uniforms. Surprise elements. When two opposing forces wear similar uniforms, it becomes challenging to distinguish friend from foe during combat. This ambiguity can lead to surprise attacks and strategic advantages. Infiltration and espionage. Soldiers in identical attire can infiltrate enemy lines more effectively. They blend seamlessly into the environment, making it harder for adversaries to detect their presence. Drawbacks of identical uniforms. Friendly fire. The risk of friendly fire increases significantly when troops wear indistinguishable uniforms. In the heat of battle, hesitation to engage can occur, potentially endangering one's own forces.
Operational confusion. In complex military operations involving multiple units or coalition forces, distinct uniforms aid coordination. Uniformity ensures clear identification and minimizes confusion. Psychological impact. Unique uniforms foster a sense of pride, identity, and loyalty. Soldiers often associate their attire with honor, duty, and sacrifice. Altering this psychological connection may have unintended consequences. Historical context and national identity. Cultural significance. Military uniforms often reflect a nation's history, values, and traditions. Diverse attire celebrates cultural heritage and distinguishes one force from another. Symbolism. Uniforms serve as symbols of sovereignty and national pride. They evoke emotions and convey a sense of purpose. Altering them requires careful consideration. Strategic adaptability. Terrain-specific uniforms. Different environments demand specialized attire. Camouflage patterns optimized for specific landscapes enhance survivability. Uniform diversity allows flexibility in adapting to varied conditions. Tactical advantage. While similar uniforms aid surprise attacks, unique attire can provide tactical advantages. For instance, specialized gear for mountain warfare, desert operations, or urban combat. International relations and cooperation. Coalition operations. In multinational coalitions, standardized uniforms facilitate cooperation. Allies recognize each other swiftly, enhancing joint efforts. National sovereignty, however, distinct uniforms also symbolize each nation's sovereignty. They reinforce the idea that each military serves its unique interests. Balancing act. Strategic decision. Ultimately, the choice between uniformity and diversity depends on a nation's strategic goals. Balancing operational efficiency, psychological impact, and national identity is crucial. Case-by-case basis. Some military alliances adopt common uniforms, e.g. NATO, while others maintain distinct regalia. Each situation warrants careful evaluation. As an artificial intelligence, I lack personal opinions or patriotism, but I appreciate the complexity of this topic. The decision lies with military leaders, considering both practicality and symbolism. मेरे प्रिय मित्र, आपकी धारणा सचमुच विचारोत्तेजक है। आइए इस मामले के पेचीदगियों का पता लगाएं। सरल पोशाक में एकरूपता बनाम विविधता, एक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य रेख। समान वर्दी के लाभ, आश्चर्यजनक तत्व। जब दो विरोधी ताकतें एक जैसी वर्दी पहनती हैं, तो युद्ध के दौरान दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस अस्पष्टता से आश्चर्यजनक हमले और रणनीतिक लाभ हो सकते हैं। घुसपैठ और जासूसी। एक जैसे पोशाक में सैनिक दुश्मनों की सीमा में अधिक प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर सकते हैं। वे पर्यावरणीय सहजता से घुल मिल जाते हैं, जिससे विरोधियों के लिए उनकी उपस्थिति का पता लगाना कठिन हो जाता है। 2. समान वर्दी की कमियां। नेतृत्वपूर्ण गोलीबारी। जब सैनिक अलग अलग वर्दी पहनते हैं, तो नेतृत्वपूर्ण गोलीबारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। लड़ाई की गर्मी में शामिल होने में झिझक हो सकती है, जिससे संभावित रूप से किसी की अपनी सेना खतरे में पड़ सकती है। ऑपरेशनल कंफ्यूजन। कई इकाइयां गठबंधन बलों से जुड़े जटिल सैन्य अभियानों में अलग अलग वर्दी समन्वयों में सहायता करते हैं। एकरूपता स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करते हैं और भ्रम को कम करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अनोखी वर्दी पहचान और वफादारी की भावना को बढ़ावा देते हैं। सैनिक अक्सर अपने पोशाक को सम्मान, कर्तव्य और बलिदान से जोड़ते हैं। इस मनोवैज्ञानिक संबंध को बदलने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। 3. ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय पहचान। सांस्कृतिक महत्व। सैन्य वर्दी अक्सर किसी देश के इतिहास, नियम और परंपराओं को दर्शाती है।
विविध पोशाक सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं और एक ताकत को दूसरे से अलग करते हैं। प्रतीकवाद वर्ग संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। वे भावनाएं जगाते हैं और उद्देश्य की भावना व्यक्त करते हैं। उन्हें बदलने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। 4. रणनीतिक अनुकूलनशीलता इलाके विशिष्ट वर्ग विभिन्न वातावरण विशेष पोशाक की मांग करते हैं। विशिष्ट परिदृश्यों के लिए अनुकूलित छलावरण पैटर्न उत्तरजीविता को बढ़ाते हैं। समान विविधता विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल अनुकूलन में लचीलेपन की अनुमति देती है। सामरिक लाभ जबकि समान वर्ग आश्चर्यजनक हमलों में सहायता करते हैं, अद्वितीय पोशाक सामरिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पर्वतीय युद्ध, रेगिस्तानी अभियान या शहरी युद्ध के लिए विशेष उपकरण। 5. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग गठबंधन संचालन बहुराष्ट्रीय गठबंधनों में मानकीकृत वर्ग सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। संयुक्त प्रयासों को बढ़ाते हुए सहयोगी दल एक दूसरे को तेजी से पहचानते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता हालांकि अलग अलग वर्ग भी प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है। वे इस विचार को पुष्ट करते हैं कि प्रत्येक सेना अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करती है। 6. संतुलन अधिनियम रणनीतिक निर्णय अंततः एकरूपता और विविधता के बीच चयन किसी देश के रणनीतिक लक्ष्य पर निर्भर करता है। परिचालन दक्षता मनोवैज्ञानिक प्रभाव और राष्ट्रीय पहचान को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। मामला दर मामला आधार कुछ सैन्य गठबंधन सामान्य वर्ग अपनाते हैं, उदाहरण के लिए नाटो, जबकि अन्य अलग राज्य चिन्ह बनाए रखते हैं। प्रत्येक स्थिति सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की गारंटी देती है। एक कृत्रिम बुद्धि के रूप में मेरे पास व्यक्तिगत राय या देशभक्ति की कमी है, लेकिन मैं इस विषय की जटिलता की सराहना करता हूँ। व्यावहारिकता और प्रतीकात्मकता दोनों पर विचार करते हुए निर्णय सेना नेताओं पर निर्भर करता है। region letter U, region letter S, region letter B, region letter B. Almas Jacob आप देख रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका का यह जो कमांडर यहाँ पर खड़ा है, इसका जो यूनिफॉर्म है सेम टू सेम वैसा ही यूनिफॉर्म, सिर्फ यहाँ पर जो टेक्सचर बना हुआ है सिर्फ वो फर्क है, कलर्स फर्क है, बाकी आप देख सकते हैं कि सूट की बनावट जो है वो बिल्कुल सेम है। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ है और आप देख सकते हैं कि इनके ड्रेस में और अमेरिका की आर्मी के ड्रेस में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इन सब की बनावट सेम है। आप देख सकते हैं जिस तरह की शर्ट बनी हुई है, इनके कफ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी कॉलर देखें, सेम टू सेम कॉलर आपको नजर आ रही है। उसके अलावा बिल्कुल सेम शर्ट नजर आ रही है। इसी तरह से जहां पर इनका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से नाम लिखे हुए और ये यूएस आर्मी के हैं, ये पाक आर्मी के हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम उसी तरह से सेम टू सेम ड्रेस क्यों है। नीचे टी शर्ट देखें जैसे उन्होंने पहनी हुई है, असल में उन्होंने पहले नीचे टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी हुई है और इस तरह से उनके ट्राउजर्स की शेप भी बिल्कुल सेम होती है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका की आर्मी का ड्रेस एक जैसा है। फिर सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया की भी आप देख सकते हैं कि आर्मी का ड्रेस सेम टू सेम आपको नजर आएगा, बस सिर्फ कलर का फर्क है, टेक्सचर का फर्क है। बाकी शर्ट की शेप बिल्कुल वही है, कलर बिल्कुल वही है, नाम उसी तरह से लिखा हुआ है और उसी तरह से इनके ट्राउजर्स हैं और बाकी जूते वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम। वैसा क्यों है? अब ये बात सिर्फ मैंने नहीं नोटिस की है, आप देख सकते हैं कि रेडिट के ऊपर किसी ने सवाल किया, व्हाई सो मेनी नेशंस अडॉप्टेड Western style military uniforms and brass bands. और इसी तरह से कोरा के ऊपर किसी ने सवाल किया, why does army all around the globe has almost similar uniform? तो ये लोग जिन्होंने ये चीज नोटिस किया वो सवाल कर रहे हैं कि असल में ऐसा क्यों है। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है और उसकी रीजन ये है कि जब मुल्क फर्क है, आइडियोलॉजी फर्क है, कल्चर फर्क है, तो ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम क्यों है। उसकी एक रीजन ये है कि इस वक्त
वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए सबको, आर्मी को खासतौर से मैं आपको बता दूं, उनको एक किया जा रहा है ग्लोबली, एक ग्लोबल आर्मी बन रही है। और उसकी रीजन ये है कि अब आर्मी जो है वो आपस में फाइट नहीं करेगी, आर्मी ने आपस में जंगें नहीं करनी है। इनकी जंग किसके साथ होगी? सिविलियंस के साथ, खासतौर से उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ जिनको ये लोग दहशतगर्द का नाम देंगे। तो मैंने जिक्र क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इसराइल के अंदर the Mexican-American War was a conflict between the United States and Mexico that took place from April 1846 to February 1848. It stemmed from the United States annexation of Texas in 1845 and a dispute over whether Texas ended at the Nueces River Mexican claim or the Rio Grande U.S. claim. Here are the key points. Annexation of Texas. The war began after the U.S. annexed Texas, which Mexico considered part of its territory. Border dispute.
The disagreement over the Texas-Mexico border led to hostilities. U.S. victory, U.S. forces were consistently victorious, resulting in the acquisition of over 500,000 square miles of Mexican territory. Treaty of Guadalupe Hidalgo. The war ended with the peaceful transfer of disputed lands and formal recognition of Texas as American soil. The war had significant implications for both nations and contributed to tensions leading up to the American Civil War. Salam, Michaela. Salam. How are you? Fine, and you? You were up very early. Hi, darling. Come here. Why did you do that? You could have hurt yourself really badly. Back here right now. No. Okay, so what are we talking about today about Almas Jacob? What did he do now? Do you know career as a data analyst or a data scientist? 365 data science is the highest. आलमास जैकब आप देख रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका का ये जो कमांडर यहाँ पर खड़ा है, इसका जो यूनिफॉर्म है सेम टू सेम वैसा ही यूनिफॉर्म, सिर्फ यहाँ पर जो टेक्सचर बना हुआ है सिर्फ वो फर्क है, कलर्स फर्क है, बाकी आप देख सकते हैं कि सूट की बनावट जो है वो बिल्कुल सेम है। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ है और आप देख सकते हैं कि इनके ड्रेस में और अमेरिका की आर्मी के ड्रेस में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, इन सब की बनावट सेम है। आप देख सकते हैं जिस तरह की शर्ट बनी हुई है, इनके कफ आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप इनकी कॉलर देखें, सेम टू सेम कॉलर आपको नजर आ रही है, उसके अलावा बिल्कुल सेम शर्ट नजर आ रही है। इसी तरह से जहां पर इनका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से नाम लिखे हुए, और ये यूएस आर्मी के हैं, ये पाक आर्मी के हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम उसी तरह से सेम टू सेम ड्रेस क्यों है। नीचे टी शर्ट देखें जैसे उन्होंने पहनी हुई है, इसी तरह उन्होंने पहले नीचे टी शर्ट पहनी है और उसके ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। अब इस तरह से उनके ट्राउजर्स की शेप भी बिल्कुल सेम होती है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका की आर्मी का ड्रेस एक जैसा है? फिर सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया की भी आप देख सकते हैं कि आर्मी का ड्रेस सेम टू सेम आपको नजर आएगा, बस सिर्फ कलर का फर्क है, टेक्सचर का फर्क है, बाकी शर्ट की शेप बिल्कुल वही है, कलर बिल्कुल वही है, नाम उसी तरह से लिखा हुआ। एक ग्लोबल आर्मी बन गई है और उसकी रीजन ये है कि अब आर्मी जो है वो आपस में फाइट नहीं करेगी, आर्मी ने आपस में जंगें नहीं करनी है, इनकी जंग किसके साथ होगी? सिविलियंस के साथ, खास तौर से फ्रीडम फाइटर्स के साथ, जिनको ये लोग दहशतगर्द का नाम देंगे। Here, Almas Jacob asked, why do Pakistani army contain similar military uniform code as the United States? She answered herself, United States want to control the global army against civilians, calling them terrorists in the name of beast. Now, why she want to defame the United States espionage policy? Do you think you could type that where I could read it? Because your trans mumbly to me. I'm not able to hear the words very clearly. Habibi, could you hear me? No, I could not hear you. I don't know what happened. The last time you were speaking, your app sounded mumbly. Okay, let me read what you've got here on your Google Translate. So I think that Almas Jacob knows if United States military espionage policy can't be globally successful to protect their sovereign, then her anti-knowledge propaganda would be exposed by her national military. Then she could not be able to address the United States of America, a terrorist country. I don't know what you're trying to say here. Yes, I think that Almas Jacobs, if United States military espionage policy. Who are you calling her? Are you calling the United States her, or are you calling Almas Jacobs her?
So, are you calling Amish? Referring to Amish Jacob as a terrorist. So, what thing is Amish Jacob doing right now that we need to discuss? What I'm going to look it up on Google while we're talking. What is Amish Jacob up to? Who is Amish Jacob being a terrorist against? Okay, so Amish Jacob, one of the Pakistanis, probably because it's camouflage uniforms. Like, what country is Pakistan? What country does Pakistan have soldiers deployed in? Are they deployed in areas that have many trees and greenery? When you have military personnel deployed where there are trees and shrubs and forests, the uniform's going to be green. If the area where the men or women are deployed is a desert, right, then the uniforms are going to be tan. And if the area is snow, if there's a lot of snow there, the the country whatsoever. It's going to depend on where Pakistan has their soldiers. Where are their soldiers stationed at? Right? Where are the soldiers of the Pakistani army? Where are they stationed? If there's jungles and forests, they're going to have green uniforms. So it doesn't have anything to do with Pakistan and the United States being like allies or partners in war. It doesn't mean that. It doesn't mean that we're not working together with Pakistan for something, but it doesn't mean that we are. It has nothing to do with us whatsoever. It has to do with where the soldiers are located. If they're located in the forest, they're going to wear green. If they're located in the mountains with the snow, they're going to wear white. If they're located in the desert, they're going to wear tan. That's it. Is this a military uniform that you designed? Is this one of your designs for military uniform? Those are very pretty colors. I don't know about that red patch with the white star. That would get someone killed. You know what? That red patch on her arm with the white star, a sniper would see that and kill you if you were in active battle. Now, that might be okay for a uniform to wear, like to, in the bear. It might be okay to wear on the base where you don't have any, where you're not fighting against enemies and it's your own army. But that red is going to have to go because your enemies are going to see that and they're going to be able to see from a distance and shoot you. Okay, Habibi, now I am showing some military uniform of some national army in the theory of Almas Jacob, and you have to predict if the uniform dress code make any sense or not. Okay, we're ready. Let me know when you're ready. Okay, so I mean, as long as you don't have bright red, I mean, there are birds that are red, but still. I mean, the green uniform, hey, if you were on the base, on the military base, red patch and the white star, but not out in combat, not while you're in combat trying to hide in the trees.
What are you giggling about? We get very distracted. I know, we know that. I know, I get very distracted. Okay. Definitely not that one. Where would they hide? Where would she hide in battle? I don't know where she can be camouflaged at wearing all red. You're silly. Michaela, how old are you? I'm just wondering. I have a question. You're 27, okay. What about Babylawos is 27, 20? Oh. Some of our chiefs in Nigeria are about that age. I know some of our many of our chiefs are about same age as you. I don't know. Can you tell me if different national military uniforms, dress code, making yep. I don't know. I don't think they can make any sense for espionage policy. Well, espionage is a different thing. I mean, military uniforms are typically made for combat. Espionage is going to be like just a regular person. You know? It's going to be a regular person. They're going to be wearing regular clothes. That's it. That's how espionage is. Do you know someone's been calling me from Microsoft? Someone who was my Microsoft technician from, I guess, India or somewhere, I think. I think he told me it was in India. Almost 10 years ago, found me and called the house. Found me. Microsoft technician. I'm just afraid for him. Wow, what can we say about Almas Jacob's theory? What is तुम कहते रहो ये बात राज पेपर सामने अपनी किताब में रखी थी और आप देख सकते हैं कि रिलीजन के सेक्शन में उन्होंने लिखा है रिलीजन will be outlawed and believers will be either eliminated or imprisoned यानी कि जो मजहब है उसको गैर कानूनी कर दिया जाएगा और जो भी कोई किसी भी मजहब के ऊपर बिलीव करने वाला होगा उसको यहाँ पर मार दिया जाएगा अगर वो अपना मजहब नहीं छोड़ा तो यहाँ पर उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर इसराइल अब क्या कर रहे हैं उन लोगों को जो कि एक मजहब के अंदर मानते हैं उनको सिर्फ उस मजहब पर यकीन रखने की वजह से उनको क्या किया जा रहा है एलिमिनेट किया जा रहा है उनको मारा जा रहा है कत्ल किया जा रहा है और इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो कि खुदा के कलाम को प्रेज करते हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है इंडिया में जो हाल है आपके सामने है ये सारा कुछ जो है वो हमें बता रहा है खुदा के कलाम की एक प्रोफेसी जिसमें लिखा हुआ है कि लोग समुंदर से समुंदर तक जाएंगे शुमाल से मशरक तक जाएंगे ढूंढते फिरेंगे कि कहीं से उनको खुदा का कलाम मिल जाए कोई उनको खुदा के कलाम की सच्चाई के बारे में बता दे लेकिन उनको कलाम नहीं मिलेगा शायद उसकी रीजन ये है कि कलाम जो है वो बैन कर दिया जाएगा पेपर बंद कर दिया जाएगा उठा लिया जाएगा और किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होगा जिसके पास भी होगा तो अपने दिल में रखेगा वो किसी को भी बताने से क्या करेगा खौफ सदा होगा कि ये कहीं मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे
इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वक्त जो है वो बहुत ज्यादा कम रह चुका है, वक्त बिल्कुल सर पर आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि हम किस तरह चलते जा रहे हैं। उसका मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बताना ही था कि आप इन्होंने मजहब का कवर है, तो जिसके पास खुदा का कलाम मौजूद है, अगर आपने कहीं पर उसको कवर करके रखा गया किसी अच्छी ऊंची जगह पर, तो वहां से उसको निकालें, उसको पढ़े, उसको अपने दिल के अंदर रखिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अगर आपको समझ नहीं आती है, तो कोई ऑडियो बाइबल ले लें, इस तरह की किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें। नेटफ्लिक्स के ऊपर तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरनेट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास वक्त कम है, उससे ज्यादा पाक तरीन अगर इनका कोई टाइम होता है तो वो यही होता है रोजा। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त के अंदर इनको इजाजत नहीं है कि अपनी होलीएस्ट प्लेस पर जाकर, पाक जगह पर जाकर दुआ कर सके। बेसिकली यहाँ पर रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो रखी जा रही है, और आगे जब इस्लाम का पावर बढ़ेगा तो उन्होंने तमाम रिलीजन्स को क्या करना है, खत्म करना है। इसी वजह से आपको पता है कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर भी यही चीज दिखाई जा रहा है। मसीहियों के खिलाफ जो है वो हेट बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? ताकि मसीही भी आगे से लड़ाई करें। ऊपर क्या है कि लोगों को ये बताया जाए कि जो देखें जो मजहब की वजह से लड़ाई होती है, इसलिए मजहब को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये बात राज कतर साहब ने अपनी किताब में लिखी थी, और आप देख सकते हैं कि रिलीजन के सेक्शन में उन्होंने लिखा है, रिलीजन Certainly. Here's a simple C program that calculates acceleration based on the final velocity v, initial velocity u, and the distance es using the formula. Hashtag include style.h, int main, double initial underscore velocity, final underscore velocity, distance, acceleration, // get input from the user. Printf, enter initial velocity u in n/s. Scanf, %lf, and initial underscore velocity. Printf, enter final velocity v in n/s. Scanf, %lf, and final underscore velocity. Printf, enter distance s in meters. Scanf, %lf, and distance. // calculate the acceleration. Acceleration equals final underscore velocity asterisk final underscore velocity, initial underscore velocity asterisk initial underscore velocity, / 2 asterisk distance. / display the result. Printf, the acceleration is %lfm/s2 acceleration. Return 0. Compile and run this program, and it will prompt you to enter the initial velocity, final velocity, and distance. After entering these values, it will calculate and display the acceleration. Remember, the units of measurement for velocity should be meters per second m/s, and for distance it should be meters m. Including the math.h header file in your C program allows you to use various mathematical functions that are part of the C standard library. For example, you could use the pow function to calculate the square of the velocities, which might make the code more readable for some. Here's how you could modify the program to use math.h. Hashtag include style.h. Hashtag include math.h. Int main.
double initial underscore velocity, final underscore velocity, distance, acceleration, // get input from the user. Printf, enter initial velocity u in m/s. Scanf, %lf, and initial underscore velocity. Printf, enter final velocity v in m/s. Scanf, %lf, and final underscore velocity. Printf, enter distance s in meters. Scanf, %lf, and distance. // calculate the acceleration using POW function. Acceleration equals POW final underscore velocity 2 POW initial underscore velocity 2 / 2 asterisk distance / display the result. Printf, the acceleration is %lfm/s2 \n acceleration. Return 0. By using POW x, y, you're raising x to the power of y. In this case, POW final underscore velocity 2 calculates v squared, and POW initial underscore velocity 2 calculates u squared. Remember to compile with LM to link the math library. GCC acceleration znak podkreślenia program acceleration znak podkreślenia program.cn. This will create an executable named acceleration underscore program that you can run to calculate the acceleration. Certainly, you can directly use the expression as the output without storing it in a separate acceleration variable. Here's how you could modify the program to do that. Hashtag include style.h. Hashtag include math.h. Int main. Double initial underscore velocity, final underscore velocity, distance, // get input from the user. Printf, enter initial velocity u in m/s. Scanf, %lf, and initial underscore velocity. Printf, enter final velocity v in m/s. Scanf, %lf, and final underscore velocity. Printf, enter distance s in meters. Scanf, %lf, and distance. // calculate and display the acceleration directly. Printf, the acceleration is %lfm/s2 POW final underscore velocity 2 POW initial underscore velocity 2 / 2 asterisk distance. Return 0. This program will calculate the acceleration and display it immediately after computing the expression within the printf function. Just remember to compile with LM to link the math library if you're using functions from math.h. In C, it's not possible to use printf and scanf in a single line of code because scanf requires an address to store the input data, which cannot be provided within a printf statement. However, you can write a compact code by minimizing the use of variables and combining statements where possible. Here's an example of a more compact version of the program. Hashtag include style.h. Hashtag include math.h. Int main. Printf, enter initial velocity u in m/s. Scan elec su. Printf, enter final velocity v in m/s. Scanf %lf enter. Printf, enter distance s in meters. Scanf %lf and s. Printf, the acceleration is %lfm/s2 POW v2 POW u2 / 2 asterisk s. Return 0. This code still adheres to the C language syntax and conventions while being more concise. Remember that clarity and maintainability are important in programming, so it's essential to strike a balance between compact code and readability.
Certainly, the C program you've written is a compact and efficient way to calculate acceleration. Here's a breakdown of how it works. Header files. The program includes two header files. Style.h for input-output functions like printf and scanf. Math.h for the pow function used to square the velocities. Main function. The main function is the entry point of the program. Variable declaration. Three double-type variables u, v, and s are declared to store the initial velocity, final velocity, and distance, respectively. Input and output. The program uses a single line to handle input and output operations. Printf is used to display a message to the user. Scanf is used to read the user's input and store it in the respective variables. The comma operator is used to separate these operations, allowing them to be executed sequentially in a single line. Acceleration calculation. The acceleration is calculated using the formula. This is done directly within the printf statement that displays the result. Return statement. Finally, the return zero statement signifies the successful execution of the program. By using the comma operator, you've effectively condensed multiple statements into one line, which is syntactically correct in C and executes the statements in the order they appear. However, this style may sacrifice some readability for compactness. It's a trade-off between concise code and maintainability. In professional programming, clarity is often preferred for the benefit of others who may read and maintain the code later.
Certainly, to calculate the mass of a planet using the gravitational constant, diameter, and velocity related to Einstein's kinetic energy, we would need to clarify the relationship between these variables. Typically, the mass of a planet is calculated using the gravitational constant and the orbital characteristics of a satellite orbiting the planet, such as its period and distance from the planet. However, if we consider Einstein's equation for kinetic energy, Ke, in the context of special relativity, where \gamma is the Lorentz factor, Gen is the mass, and c is the speed of light, we can see that the velocity here is related to the kinetic energy of a moving object, not the mass of the planet. For a more standard approach to calculating the mass of a planet, we can use Newton's law of universal gravitation and Kepler's third law. Here's a simplified version of how we might calculate the mass of a planet using the gravitational constant g, the radius r, which is half the diameter, and the orbital velocity v of a satellite. By equating the gravitational force to the centripetal force and solving for m, the mass of the planet, we get, here's a C program that uses this formula. Hashtag include style.h. Hashtag include math.h. Int main. Double G equals 6.67430 times 10 to the power of negative 11 / gravitational constant and m cubed kg caret dash 1s to the power of negative 2. Double diameter, velocity, mass, / input the diameter and velocity. Printf, enter the diameter of the planet in meters. Scanf, %LF, and diameter. Printf, enter the orbital velocity in m/s. Scanf, %LF, and velocity. / calculate the mass. Mass equals pow diameter /2 asterisk velocity /g / output the mass. Printf, the mass of the planet is %ekg \n mass. Return 0. This program will calculate the mass of a planet given its diameter and the orbital velocity of the satellite. Keep in mind that this is a simplification and actual mass calculations would require more complex considerations, especially when taking into account Einstein's theories of relativity.
Certainly, the C program you've provided calculates the mass of a planet based on its diameter and the orbital velocity using the gravitational constant. Here's a step-by-step explanation. Header files. The program includes two header files. Style.h for input-output functions, printf and scanf. Math.h for the POW function, which is used to square numbers. Main function,
This is where the program starts executing. Variable declaration. G is a double-type variable initialized with the gravitational constant value in units of m cubed kg caret dash 1 s caret dash 2e. Diameter, velocity, and mass are declared as double-type variables to store the respective values. Input and output in one line. The program uses the comma operator to execute multiple statements in one line. Printf displays a prompt to the user. Scanf reads the user's input and stores it in the corresponding variable. The final printf calculates the mass using the formula \frac en diameter /2 caret 2 backslash dot velocity caret 2 go and displays it. Return statement return 0 indicates that the program has executed successfully. The use of the comma operator allows for a compact code structure, but it may reduce readability. It's important to balance the consistency of code with its readability and maintainability, especially in collaborative environments. The program assumes the user enters the diameter and velocity correctly and uses these values to calculate the mass of the planet using the given formula. The result is displayed in scientific notation due to the %i format specifier in the printf statement. Certainly. The comma operator in C allows you to execute multiple statements in a single line, which can make the code more compact. However, this can reduce readability for several reasons. Clarity. Each statement in a program typically performs a distinct action. When multiple statements are combined in a single line, it can be challenging to quickly understand what each part of the line is doing, especially for those who are new to the code or to programming in general. Debugging. Debugging can be more difficult when multiple operations are on the same line. It's easier to set breakpoints and inspect variables when each operation is on its own line.
Maintenance. Code is often read more frequently than it is written. Clear code with a consistent structure is easier to maintain and update. When operations are combined, it can be harder for other developers to modify or extend the code. Conventions. It's a common convention in C programming to have each operation on its own line. This convention aids in understanding the flow of the program and is what most C programmers expect to see. Comments. It's easier to comment on specific operations when they are on separate lines. Inline comments can become cluttered when used with the comma operator. In summary, while the comma operator can make your code shorter, it often comes at the cost of making the code less readable and maintainable. It's generally recommended to use it sparingly and to prioritize code clarity. Creating a C program to calculate the amount of carbon dioxide, CO2, needed to produce a diamond and oxygen gas involves understanding the chemical process behind the conversion. The process of turning CO2 into diamonds is not straightforward and typically requires high pressure, high temperature, and a catalyst. However, based on the information provided by Ether, a company that creates diamonds from atmospheric CO2, each carat of diamond produced removes approximately 20 tons of CO2 from the atmosphere.
This is a proprietary process that involves complex chemical reactions and cannot be accurately replicated in a simple C program. If you're looking for a theoretical program that uses this ratio for calculation, here's an example that calculates the amount of CO2 needed to create a certain number of carats of diamonds. Hashtag include stio.h. Int name, double carats, double co2 underscore per underscore carat equals 20,000, / 20 tons of CO2. Double total underscore co2, / input the number of carats. Printf, enter the number of carats of diamond. Scanf, %lf, and carats, / calculate the total CO2 needed. Total geopolonia, 2 carats, polonia 2 geopar // output the total CO2. Printf, total CO2 needed to create %.2 lf carats of diamond. %.2 lf tons / n, carats, total underscore co2. Return 0. This program will calculate the total amount of CO2 needed to create a specified number of carats of diamonds, using the ratio provided by Ether. Please note that this is a theoretical calculation, and the actual process of creating diamonds from CO2 is much more complex and requires specialized equipment and conditions.
Certainly, the C program you've provided is designed to calculate the amount of carbon dioxide, CO2, required to theoretically create diamonds. Here's a breakdown of the program. Header file. The program includes the style.h header file, which is necessary for input-output operations in C, such as printf and scanf. Main function. This is the entry point of the program where the execution begins. Variable declaration. Carats, a double-type variable to store the number of carats of diamond the user wants to create. Co2 underscore per underscore carat, a double-type constant set to 20,000, representing the theoretical amount of CO2 in tons needed to create 1 carat of diamond. Input and output operations. The program uses the comma operator to execute multiple operations in a single line. This includes prompting the user to enter the number of carats, printf, reading the user's input and storing it in the carats variable, scanf, calculating the total amount of CO2 needed by multiplying carats by co2 underscore per underscore carat and displaying the result, printf. Return statement. The return 0 statement signifies the successful termination of the program. The use of the comma operator allows for a compact code structure, but as mentioned earlier, it can reduce readability because it combines multiple distinct operations into a single line. This can make the code harder to read, debug, and maintain. However, in this program, the operations are simple enough that the use of the comma operator doesn't overly complicate understanding the code's functionality. The program assumes that 20 tons of CO2 are
needed to create 1 carat of diamond, which is a theoretical value and not based on actual chemical processes. The result is displayed in tons to the user. Certainly. During our discussion about C programming, we covered several topics and concepts. C program creation, we discussed how to create C programs for various calculations, such as acceleration using initial and final velocities and distance, and the theoretical mass of a planet using gravitational constant, diameter, and velocity. Use of the math.h, we explored the inclusion of the math.h, a header file in C programs to utilize mathematical functions like pow for squaring numbers. Code optimization, we talked about optimizing C code by directly using expressions in output statements instead of storing them in variables. Comma operator, we delved into the use of the comma operator to execute multiple statements in a single line of code and discussed its impact on code readability and maintainability. Theoretical calculations, we created a theoretical program to calculate the amount of CO2 needed to produce diamonds from carbon dioxide, based on information provided by a company that creates diamonds from atmospheric CO2. Code explanation, I provided explanations for the C programs you wrote, breaking down each part of the code and its purpose. Readability concerns, we discussed why using the comma operator might reduce readability in C programs and the importance of balancing code conciseness with clarity. Throughout our conversation, we focused on practical examples of C programming, emphasizing the importance of clear and maintainable code. If you have any more questions or need further assistance with C programming or any other topic, feel free to ask.